Just a second. I will record it from here. So kids, I'll give you a quick recap of what we have done. Trigonometry. So we started with trigonometry. Trigonometry is a branch of mathematics where we learn about the relations between the sides and the angles of a triangle. To represent the angles of a triangle, we are using Greek alphabets, which are alpha, beta, gamma, theta, and phi, right? The triangle in which we are interested is a right angle triangle, right? So in right angle triangle, if we have a specific angle, right? If we choose a specific angle, the sides are named accordingly. If this angle is theta, the side opposite to it will be perpendicular. The other side will be base and hypotenuse remains hypotenuse for all the angles, right? Whichever angle we choose. Then comes, then comes the six basic functions of trigonometry, which are sine, cos, tan, cosec, sec, and cot. So these are, as I said, these are the functions. So we should give them some input also. The input which is given to these functions is, these functions will help us establish a relation between the angles and the sides of a triangle. What will these functions do? Harshit, what will these functions do? Sir, I didn't understand that. Sir, I didn't understand this like this sign part. No, no, no. I'm saying these are six basic functions of trigonometry, right? Its functions. These are the six basic functions of trigonometry. Okay, Kavish, Harshit, वैष्णवी, अनिकेत, समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, Yes, चंदन, sir. समृद्धि, निवान. Yes, sir. Okay, okay. So now the input which is given to these functions, as I said, input should be given to the functions, right? For example, तुम्हारे पास टीवी का रिमोट है मान. This is my AC's remote. So if I want to lower the temperature, I will push the lower button, the temperature button, and the temperature will be lowered, right? Or it can be increased from here, right? So similarly, the input has to be given. So here also the input has to be given. So this function establishes the relation between the angle and the sides of the triangle. So the input given here is the angle of the triangle. तो साइन थीटा क्या हुआ बेटा यहाँ पर? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन Perpendicular side. हाइपोटेन्यूज. Oh, ठीक है. सेकेंड वन इज कॉस थीटा. हाउ इज कॉस थीटा गिवन? So cos theta Base relates theta upon and S. sides as v by h, right? Third one is tan theta. Tan relates the angle and the sides as perpendicular upon Perpendicular base. upon base. It is, it can also be given as sine theta upon cos theta. So when you do the maths here, it's P upon H upon B upon H. You get P upon B. Then comes the fourth one, which is cosec theta. Cosec theta is nothing but 1 upon sine. And this is H upon P. Fifth one is sec theta. The relation which sec theta establishes with angle and sides is H upon B. Sixth one is cot theta, which is 1 upon tan theta. Okay, I hope all of you understood this. Yes or no? yes, Any sir. doubts till this point? Any doubts? If you have any doubts, you can ask. If you don't have any doubts, please go and please start writing, start making notes. Do it as quickly as possible without committing any mistakes. Though I will share the recording, but please make notes, right? It will help you. It will sink into your mind. And once you are done writing it, type done in the comment. Okay, all of you. Please do it quickly.
Keep writing, keep writing. Please write it quickly. Sir, I didn't understand this are like the relations of functions with the with the triangle. See, once we have, देखो जैसे I'll give you an analogy. You have volume button in the television remote, yes or no? Yes. So if you want to increase the volume of television, what do you do, Kavish? Sorry, Harshit. Sir, I press the button and the volume Press the increases. volume button, Yes, sir, I press the right? volume button and the volume increases. Similarly, here also, there is a specific function called as sine, right? So the input which is given, essentially the input which is essentially given to this function is the angle of Sine. the triangle. उसको इनपुट क्या देना है? जैसे बटन प्रेस कर रहे थे ना हम लोग, तो हमारा प्रेस करना वाज द इनपुट, राइट? तुम ऐसे उसको बटन, उसको रिमोट को ऐसे रख के बोलोगे वॉल्यूम बढ़ जा, बढ़ेगा क्या? No, sir. बटन दब जा, दबेगा क्या? नहीं, No, sir. है ना? तो ऐसे ही वहां पे हमने क्या बोला, हमारे पास साइन फंक्शन है एक, उसको हमने क्या इनपुट दिया? थीटा का इनपुट दिया, एंगल का। तो जैसे ही एंगल का इनपुट दिया, उसको साइन को क्या, साइन साइन ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब अब एंगल आ गया मेरे पास, अब आई हैव टू गिव सम इनपुट। तो द इनपुट विच इज डेजिग्नेटेड, द आउटपुट विच इज डेजिग्नेटेड टू साइन इज, साइन को Sir. इनपुट मिल गया। Yes, sir. अब उसका जो Theta. आउटपुट आएगा वो है परपेंडिकुलर अपॉन पर हाइपोटेन्यूज, yes. Oh. ये वैल्यू आएगी। Oh. सिमिलरली जब कॉस को वो इनपुट मिलेगा तो वो क्या बोलेगा? अच्छा, मेरा आउटपुट आ गया, मेरे आउटपुट देने का टाइम आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Oh, sir. अंडरस्टूड? सो दिस इज Yes, हाउ दे sir. आर रिलेटिंग द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। Okay, sir. समझ आया बेटा? Yes, sir. चंदन, you understood or not? Chandan, Vaishnavi, Samruddhi, Nivan, Aniket, and Mr. Kavish. Kavish, why haven't you switched on your camera? Your net is not stable. If your net is not stable, then you can switch it off. I don't have any issues with that. But if it is fine, then please switch it on. Okay, good. So if you are done, type done in the comment window. Once, then we will move ahead. Okay? And please be quick. I think all of you are done with this, right? Yes, sir. Okay. Okay. Anybody who is still writing it, or you want me to wait? Kavish, you understood what I said, what I taught now? Yes, sir. Okay. Good, good. Chalo. So now, once we are aware about the trigonometric functions, let's see the quadrants of a circle. Let's discuss about the quadrants of a circle. Okay. So these are, this is a circle, this is a circle, and these are its four quadrants. This is a circle and these are its four quadrants. Quadrant का मतलब 1/4 of a circle. 1/4 मतलब we divide circle into four equal parts, which you can see here, and each section is 1/4, right? So this is the first quadrant, Yes. this is the second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. So 1, 2, 3, 4, these are the four quadrants of a circle, right? Now, these quadrants has boundaries,
defined by angles. So this is 0-degree angle. All of you have seen D, right? Which you use to measure the angle in your Yes, sir. geometry box. This is 0-degree, this is 90-degree, this is 180-degree. So all of you have seen this semicircular part, semicircular object, which is called as D, right? So 0, 90 and 180, and this is 270. We are measuring the angles from in the anti-clockwise sense, right? Starting from 0. So 0, 90, 180, 270, and this is 360 degrees. So this completes the circle. This completes the circle. Circle. Okay. So these angles, they are defining the boundaries of these quadrants. As you can see here, quadrant 1 starts from 0 degrees, ends at 90 degrees. Quadrant 2 starts from 90 degrees, ends at 180. Quadrant 3 starts at 180, ends at 270. And quadrant 4 starts at 270, ends at 360. I hope I am clear to all of you in this particular thing. Yes or no? Yes, sir. These angles, since they represent the start and end of a quadrant, they are called as reference angles. What do we call them? They are Reference called as angles. reference angles. Why do we call them reference angles? Because they mark the start and End of the end of a quadrant, quadrant. right? This is an angle ka sign. Anybody is having any doubt till this point, please ask. I'll be more than happy to clarify your doubts. If you have doubts, please ask. No doubts? Okay. Chalo. So now, as there are reference angles, there are standard angles also. Now, what are these standard angles? These standards are most widely used angles in trigonometry. So every quadrant has these standard angles. They are called as standard angles, right? So each quadrant has their own set of standard angles. Now these angles are, this is 30 degrees, 45 degrees, and the last one is 60 degrees. This is 30, 45, and 60 degrees. These three taken together, these are standard angles of the first quadrant. Standard angles of the first quadrant. I hope all of you understood this. Any doubts? Anybody is having any doubts, please ask. Wैसे this is not difficult to understand. Chalo. So once we know about the standard angles of first quadrant, there is a way to find standard angles of second, third, and fourth quadrant. So how do we do that? To find the standard angles, I'm giving you the method. To find the standard angles of second, third, and fourth quadrant, first method is add the smaller reference angle. Add the smaller reference angle of the respective quadrant to the standard angles of the first quadrant. क्या करते हैं हम? First quadrant के standard angles को I'll say in Hindi also. First, we add the first quadrant's standard angles. हम इस first quadrant के standard angles को इस smaller reference angle से add करते हैं. So for second quadrant, which one is a smaller reference angle, 90 or 180? All of you. 90. 90, right? So to 90, we will add the The standard 135. angles of
फर्स्ट क्वाड्रेंट, So 30, 135. 45, 60। ठीक है, तो कैसे करेंगे? I'll show it to you. So we will add 90 to 30, 45 and 60. ठीक है, we will add 90 to 30, 45 and 60. This is 120, 135 and 150 degrees. So we These have to three add are, them separately. obviously we are adding it Oh. separately. So these three angles are, लिखा है ना बेटा, पढ़ो ना, add the smaller reference angle of the respective quadrant, that is 90 degrees in this case, to the standard angles of the first quadrant. No, sir, I thought that like we have to sum up the 60, 45 नहीं and नहीं 30 बेटा, and जो then we लिखा have है to वो, add 90. नहीं नहीं हर्षित, जो लिखा है ना बेटा वो करना है ना। Oh. क्लैरिटी है इसमें अभी? अब Yes, sir. क्या करना है? वेरी गुड, शाबाश। तो these are the standard angles of second quadrant, right? These are standard angles of the second quadrant. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Okay. Okay. There is another method, that is, you can write or and then write this method, or subtract the standard angles of the first quadrant from the larger reference angle, from the larger reference angle of the respective quadrant. Respective का मतलब होता है बेटा जिस quadrant की बात हो रही, ठीक है, we are the one which is in the one which we are dealing with, right? That is the respective quadrant. So in this case, subtract the standard angles from the standard angles of the first quadrant from the larger reference angle of the respective quadrant. तो इसके लिए क्या करेंगे? All of you please pay attention. We will subtract 60 degrees, 45 degrees and 30 degrees from the larger reference angle, right? So 180 minus 60 gives us 120, 180 minus 45 gives us 135, 180 minus 30 gives us 150. I hope this is clear to all of you. Yes or no? Yes, sir. बेटा जल्दी से बोलना है, yes or no. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. शाबाश, Yes. very good, very good. Kavish, you understood? Yes, sir. Okay. Aniket, Chandan, Yes, sir. Nivan, Nivan. Yes, sir. Okay, good. Nivan, your camera is not working, I think. Yeah. वैष्णवी समझ आया बेटा? Yes, sir. शाबाश, चलो लिखो इसको जल्दी से। And once you are writing this, once you are writing this, नहीं नहीं अभी लिखो मत, सॉरी सॉरी, अभी इसको मत लिखो। You give me this, do this exercise first. Find the standard angles of, find the standard angles of the third and fourth quadrant. You write this answer in the comment window. While I check your answers, you can copy the slide. Okay? आप लोग पहले ये लिखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फाइंड द स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को मैं चेक करता रहूंगा, तब तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, प्लीज डू इट क्विकली। सो आई एम गेटिंग सम आंसर्स, वेरी गुड। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट का कविश, very good Nivan, your answers are correct for third quadrant, very good. Kavish, I am waiting for your answers, where are they? You have written only third quadrant. Very good Vaishnavi, शाबाश बेटा। पहले से आता था क्या तुम?
Very good, Vaishnavi. Shabash. No, sir, I just solve it right now. Very good. Very good. Keep it up. Very good, Nivan. Your fourth quadrant is also correct. But now start writing the slide. Okay. Very good, Kavish. Shabash. Chandan, I am waiting for your answers. Very good. Very good. I got one. Shabash. Harshit, where is your Yes. answer, beta? Yes, sir, I'm writing. Okay, very good. Very. Take your time. No worry. But don't commit mistake. Okay. Do it nicely. Do it correctly. Very good. Very good, Chandan. Second answer is also correct. एक साथ लिखो, कोई जल्दी नहीं है, देखो सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। वेरी गुड हर्षित, योर ऑल आंसर्स आर करेक्ट। शाबाश। Thank you, sir. वेरी गुड। सी दिस इज द एनर्जी आई वांट। वेरी गुड। ऑल ऑफ यू आर participating nicely. Aniket, where are your answers? Aniket? Sir, writing. Okay, चलो। हर्षित, ये इसको देखना बेटा, 360 की जगह कुछ और आएगा, चेक करना एक बार। वेरी गुड चंदन, ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट। शाबाश। Okay, please note the slide, and once you are done noting it, type done in the comment. Okay. Very good, Harshit. Very good. Shabash. Very good, Aniket. All your answers are correct. So this is how, see, these are the baby steps which you are taking, right? And this is how you should move ahead while learning a new chapter. And all of you are doing nicely, huh? Very good. सर हेलो सर। हाँ बेटा। सर आप कौन सी चैप्टर पढ़ा रहे हैं प्लीज बताएंगे? आप कौन हैं? मैं सागनिक पहाड़ी हूँ। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ नेटवर्क हो गया था इसलिए। साग्निक पानीग्रही? नहीं, मैं तुम पहाड़ी। पहाड़ी? हाँ हाँ। तो तुम दिख क्यों नहीं रहे हो मुझे? मैं अपना कैमरा ऑन करूँ? हाँ हाँ। ये मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थे तुम इतनी देर से? सर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ साग्निक। थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन रॉन्ग था इसलिए। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ साग्निक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैं क्लास 10th में हूँ। हाँ, तो 10th में तुमको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी तो आती होगी। हाँ हाँ सर। काफी ठीक ठाक आती होगी। हाँ तो हाँ। चलो ठीक है, तुमने बहुत कुछ मिस नहीं किया है अभी। पर 10th के हिसाब से भी अभी आई टीच यू समथिंग न्यू। तो थोड़ी देर बैठो, है ना? ओके। और 10th के लिए, सी दिस इज बिकॉज छोटे बच्चों को, 7th 8th 9th वाले बच्चों को जल्दी समझ में आता है। ठीक है, दे हाँ कैन रिलेट टू इट। तो तुम भी बैठ के पढ़ो। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो तुमने बहुत कुछ मिस नहीं किया है। अभी आई एम ओके। जस्ट टीचिंग देम हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके सर। राइट? You are ओके aware सर। about reference angles and standard angles, Sagnik? यस सर। Okay, good. So if you are done, kids, if you are done writing this, please type done in the comment window, all of you. Very good. So I hope all of you have noted it. Good. So now comes once we are aware about standard angles and this, there is this new thing. इसको क्या हुआ? There is some more to these quadrants, right? So let's learn those things about some more attributes of the quadrant.
So I divided it into 4 parts, 4 equal parts. These are the quadrants, right? All of you, please pay attention. This is 0 degrees, 90, 180, 270 and 360. ठीक है? For first quadrant, please remember this. These are some more attributes, right? Before that, I will define trigonometric values. What are trigonometric values? Trigonometric values are the sine, cos, and tan. We are talking about only these 3 trigonometric functions because rest of them are inverse of this, right? So sine, cos, and tan of the angles, right? Sine, cos, and tan of the angles of the triangle, right? In this case, the angles of the quadrants, right? So here, the first rule is, the first attribute is of the first quadrant is trigonometric values. Please pay attention. Trigonometric values of all the angles of the first quadrant are always positive. Are always positive. Trigonometric values of all the angles of the first quadrant are always positive. That means value of the angles which lie in the first quadrant, for example, sine of 45 degrees. It will be positive or negative? It will always be positive, Positive. right? If I ask you what is the nature of tan 30 degrees? This So angle lies positive. in first quadrant, it's positive. What can you say about cos 15 degrees? Positive or negative? Positive, right? I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Okay. Good. Shabash. Now comes the next part of it for second quadrant. Let's see. In second quadrant, please pay attention. In second quadrant, only sine of all the angles are positive in the second quadrant. ठीक है? यहाँ पे for the inference which we can draw from this statement is cos and tan of the angles of the second quadrant are negative. This is the inference which we can draw. I hope this is making sense to all of you. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. Very good. Very good. I'll give you Abhi, I'll give you work also. Na? I'll give you exercise. So then I'll see. So for example, I'll do some examples for you. Suppose I say what is cos 150 degrees. Will it be positive or negative? It will be negative. 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 Shabash. What about tan 130 degree? Negative A or positive? negative. Sir, negative. Negative. Very good. What about sine A positive. 120 degrees? Sir, positive. Positive. Very good. Now comes the next part of it. Third. Only tan of all the angles are positive in the third quadrant. ठीक है? The inference which we can draw is sine and cos of all the angles are negative in the third quadrant. Right? I'll not do, all of you have understood it. I'm very confident about that.
In the fourth one, only cos of all the angles is positive in the fourth quadrant. ठीक है? Here, sine and tan are negative, right? So I hope all of you have understood it. So I'm giving you a small exercise to do. Then once you have answered that exercise, then you can actually write this slide while I check your attempts, right? So first question is sine of 330 degrees. बोलना नहीं है, चैट में लिखना है बेटा, ठीक है? Cos of 315 degrees. Third is tan of 220 degrees. Fourth is cos of 135 degrees. Sine of 268 degrees. Sixth one is cos of 43 degrees, right? And seventh one is tan, एक मिनट बेटा, एक मिनट, 315 degrees. Eighth one is sine 230 degrees. And the last one is ninth one is tan of 150 degrees. Okay. Tell me, someone was asking me something. पूछो. Anyone who was asking? You just have to mention positive or negative in front of these 10 questions. Write this in the same sequence in the comment window. I will check it and then you can. एक प्लीज सुनो ना, एक ही रिक्वेस्ट है. एक मैसेज में आंसर लिखोगे ना बेटा, इट इज इजी फॉर मी टू चेक. हाँ, इन वन सिंगल मैसेज, राइट? सर ये कौन सा क्वाड्रेंट के लिए करे? सारे क्वाड्रेंट्स के लिए, थर्ड और फोर्थ. ये तो क्वाड्रेंट के लिए है ही नहीं ना बेटा, ये तो मतलब सारे क्वाड्रेंट में जा रहा है. किसी एक क्वाड्रेंट्स में तो इन लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव निकल सकते हैं ना? नहीं नहीं, देखो तुम लिखा है ना, जैसे मैंने किया साइन 45, हाँ. तो कौन से क्वाड्रेंट में था 45 डिग्री का एंगल? ओ अच्छा, ठीक है सर, ठीक है. समझ गए? हाँ. हाँ हाँ. Sir, यस. sir, are my answers correct? ओके, आई विल चेक. Oh wow, Kavish. So I'll check, huh? Very good, Kavish. Shabash. All your answers are correct.
Nivan, please check the. Okay, you started from second. Good. सर कर दिया मैंने, एक बार देख लीजिए। अभी देखूंगा बेटा, एक सेकंड। वेरी गुड निवान, ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट। शाबाश। सर हाँ, मेरा भी, मैंने भी कर दिया है, वो प्लीज देख लीजिए। देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, सबका एक एक करके चेक कर। रुको रुको रुको। अनिकेत, नाइन्थ वाला एक बार चेक करना बेटा। और क्या नाम है तुम्हारा? साग्निक, यस है सर। ना? यस। तुम अपना टेंथ वाला चेक करो, जो तुमने अभी डिलीट किया, हाँ उसको चेक करो। Sir, I have also posted the answers. हाँ हाँ, एक सेकंड। हर्षित ना? Yes. चेक योर थर्ड वन। हर्षित, Oh, check the okay. third answer. Okay, sir. So give me a minute. What is Hmm. tan 220? Hmm. Which quadrant does it lie? Sir, third. थर्ड में tan पॉजिटिव Oh, होता है, sorry, नेगेटिव sir. होता है? Sorry, sir. Side कोई positive. बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बस उसको ठीक करो बेटा, है ना? ठीक करना जरूरी है। वेरी गुड चंदन, ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट। शाबाश। सर आप वैष्णवी, सर आप देख लीजिए, हमने एडिट करके। देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं। रुको रुको, अभी देख। उसको ठीक कर लिया ना तुमने? हाँ हाँ। बस ठीक है। वेरी गुड वैष्णवी, शाबाश बेटा। वेरी गुड। So these are, all of you have noted this slide, noted the rules and slide. Yes, Say yes sir. or no. Yes, If you sir. have not noted it, please type done. If you have noted it, please type done. Not noted, type it. Make notes quickly. Type done if you are done. Nivan, you sent me your answers or not? Yeah, you sent. Yes. Very good. ठीक है अनिकेत, लिखो, कोई बात नहीं। I'll wait. Those of you who have not given me these details, please give me these details. Your name, your parents' name, their contact number. We will send you the recording in that number. And your feedback also. समृद्धि, where is your answer? समृद्धि चली गई क्या? नेटवर्क खराब हो। चलो कोई बात। Another 10 minutes for this session, right? Noted all of you? Yes. Okay. Aniket, हो गया बेटा? Okay. So now coming back to, let's move ahead with this. So now, once we know about the quadrants and how to find sine and cos of the angles, let's discuss three standard triangles first, right? There are three standard triangles, which are very essential triangles in trigonometry and very widely used also. So we will discuss these three triangles.
Okay, and there is this triangle. The third one. Now, all these triangles will contain the angles from the first quadrant only. This is 90 degrees, this is 90 degrees, and this is 90 degrees. The triangles are, the vertices are A, B, C. Here also A, B, C, and in this also A, B, C. The angles which we are dealing with is, this is 45 degrees, and this is 45 degrees. This is 60 degrees, sorry, not 60 degrees. I'll tell you about this. This is 30. अरे ये म्यूट करो भाई. 30, 60 and this is 90. Right? Now, एक काम करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, इसको पहले. ठीक है? Now pay attention all of you. The sides are 1, 1 following the Pythagoras theorem. This is root 2. Here the smallest side is 1, the largest side is 2. Following Pythagoras theorem, this side is root 3. Right? So, Vaishnavi, are you there? Yes, sir. Okay. Vaishnavi, in this triangle, the second one, which side is perpendicular for 60 degrees? Which side of the triangle will be perpendicular for 60 degrees, Vaishnavi? I'll go back to the first slide. Please pay attention. The angle which is, see, if I choose this angle, the side which is opposite to this will be treated as perpendicular for this angle. Okay, all of you? इस एंगल को अगर मैं चूज करता हूं तो इसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, उसका नाम परपेंडिकुलर होगा. और बेस कौन सा होगा? दूसरा साइड जो इसके परपेंडिकुलर. ठीक है? हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस होता है, ये सबको पता है. एनी डाउट्स इन दिस? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस में कोई डाउट है बेटा किसी को? No, sir. No, नहीं ना? sir. और वो कहाँ चला गया हमारा हीरो कविश? Yes, sir. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, sir. गुड. तो for 60 degrees this side will be perpendicular, for 30 degrees this side will be perpendicular, right? So please remember this. Now the questions to all of you is, and you have to do this right now, you have to find sine 45 degrees, the ratio of the angles, cos 45 degrees, sine 30 degrees. Okay, give me the answers, okay, in the chat. Cos 30 degrees following the second triangle. Fifth one is sine 60 degrees, cos 60 degrees, right? I am not asking for tan. चलो tan भी पूछ ही लेता हूं मैं. Tan 45 degrees. Sorry, no, this is not. So इतना ही कर दो, चलो tan तो रेशियो ही होता है, लिख लेते हैं. चलो tan 45. This is 7, 8, tan 30 और 9th है तुम्हारा tan 60. इसका सीक्वेंस में बदल देता हूं, एक सेकेंड. लिखो बेटा जल्दी से इसको. You have notes. The ratios are written in your notes. Just write it quickly, fill the blanks. Find the values of these. Okay? All of you, please do it quickly. सर बोलिए. सर कमेंट बॉक्स में √2 कैसे लिखे, वो तो नहीं है नाम ना? सुनो ना, वर्ड्स में लिखो. ओके हम्म. ओके सर. ओके. Please write the values quickly. You can write, if you don't know how to make root in comment box, you can actually write in words. ठीक है, चलेगा.
Then cosine 30. হচ্ছে কত 1/2। ওরে দাঁড়া না রে। Cos 30. Nivan, you understood what are perpendicular, which side is perpendicular, which side is base? Nivan? Yes, sir. Okay, good. Since you joined late, that's why I asked. Very good, Kavish. ये तुमको पहले से पता है कि आज ही सीख रहे हो? पता था ना? हाँ, तभी तुम कर रहे हो इसको फटाफट। वैसे ठीक है, चलो, पता था तो भी यू आर रिस्पॉन्डिंग गुड। वेरी गुड, निवान। चंदन, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। सर हाँ, बोलो। सर इधर पे जो लास्ट में 7 8 9 का जो है वो उसका तो मतलब आपने वो कौन सी ट्रायंगल का करो, थर्ड ट्रायंगल वाला करूँ? नहीं नहीं, मैंने लिखा है ना 60 डिग्री उसमें। Sir, please show this slide where you have written the questions. ओके, 60 डिग्री लिखा तो है यहाँ। ये देखो, इस एंगल से डील ओके करना है। सर, ओके सर, ओके सर। Chandan, I'll share the slide. Don't worry. Okay, you can make the corrections towards the end. Noted, all of you. Answers, answers. सर दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा रुकिए। 160 कविश का हो गया। निवान, वैष्णवी, आंसर कहाँ है बेटा? इस बार आंसर देर से क्यों आ रहा है? Sir, I'm just typing like करो करो, words. शाबाश। हाँ, थोड़ा टाइम लगता सर दे दिया आंसर्स, देख लीजिए एक बार। है। करेक्ट, गुड। सब ठीक है? सब ठीक है। ओके। So the answers are, I'm writing the answers for all of you. This is one by, you can check your answers. Very good. Chandan, चलो, वेरी गुड। अरे वन और, चलो कोई बात नहीं। वेरी गुड वैष्णवी, ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट, शाबाश। वेरी गुड निवान। So this is 1. I'll write the answers quickly. 1 by root 2, 1 by root 2. This is 1. The ratio of sine and cos, right? Sine 40 क्या, sine 30 क्या है? It's 1 by 2, root 3 by 2. This is 1 by root 3. Very good, Harshit. Good answers. Sine 60 is root 3 by 2, 1 by 2, and root 3. Okay. Now this, the last triangle is a very important triangle. This is formed by the smallest Pythagorean triplet.
Smallest Pythagorean triplet का मतलब the smallest integers, positive integers, of course, which form a right angle triangle, 3, 4, and 5. This is the smallest Pythagorean triplet. 3 square plus 4 square is 5 square. So that is how it forms a Pythagorean triplet, right? The angle between 5 and 3 is 53 degrees. This is 90 degrees. So this will be 37 degrees. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 53 and 37 understood. The angle between 5 and 3 is 53. I repeat, the angle between 5 and 3 is 53 degrees. Right? Now, all of you find these values for me. एक मिनट हाँ मैं जगह बना लेता हूँ. So find sine, cos, and tan of 37 degrees. Sine 37, cos 37, and tan 37 degrees. And similarly, this is 10, 11, and 12. Similar, and also find sine 53 degrees, cos 53 degrees, and tan 53 degrees. ये सब निकालना है. निकालिए. 37, 3 by 5. 3 by 5 space is 37 and 3 by 5 space. Very good, Nevan. So you understood, you learned two new angles, right? 37 and 53 degrees. And 53 electricity. 4.5. 3 by 5. Just a second, I'll answer the door. Meanwhile, you guys continue. 4 by 3. Sirs, so I got some answers. Very good. And mostly all of you are doing good. Very good. Shabash beta. Chalo. All of you, please check your answers. Sine 37 is 3 by 5, right? This is 4 by 5. This is 3 by 4. Sine 53 is 4 by 5. Cos 53 is 3 by 5. And this is 4 by 3. Very good, Harshit. Shabash. Very good, Vaishnavi. अरे वाह, तुम फ्रैक्शन में लिख दिया तुमने वो निकाल के. शाबाश. सर हमारा भी एक बार देख लीजिए वो ठीक ठाक है कि ये नहीं. तुम देखो, तुम सामने आंसर लिखा है ना बेटा, मैंने चेक कर. और मैंने ना वो 10, 11 ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा है कोई बस. बात नहीं, मैंने देख लिया. सही है. वेरी गुड. सो नाउ द लास्ट थिंग फॉर टुडेज सेशन, एंड it is related to homework, so I just we will do it very quickly. You can draw the table with me. It's a 9 cross 7 table, right? It's a 9 cross 7 table, 9 columns and 7 rows, right? So we will just fill in these values which we have learned right now, and then we will do a quick feedback session and we will move ahead. Okay, please draw this table with me quickly.
जल्दी से है, मैं फटाफट करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग थक भी गए होगे. सो दीज आर फंक्शंस 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 and 360. These are the angles which we will deal with. The values of the angles, trigonometric values: sine, cos, tan, cosec, sec and cot. I'll fill in the first two rows. Rest of the rows are your homework. Sine 0 is 0. Sine 0 is 0. Cos 0 is 1. Sine 30, all of you have just found it. Root 1 by 2. This is root 3 by 2. This is 1 by root 2. This is 1 by root 2. Right? Cos 60 is 1 by 2. Sine 60 is root 3 by 2. You have just found it out. Right? Sine 90 is 1. Cos 90 is 0. This you are not aware of. Sine 180 is 0. Cos 180 is minus 1. Sine 270 is minus 1. Cos 270 is 0. Sine 360 is 0. Cos 360 1. So you have to memorize these values. You have to memorize these first three rows of the table. This table is called as trigonometric table. This table is called as trigonometric table. Please write it quickly. And then the homework for you is, I'm sharing my number with you. You can send me the homework. Take a screenshot of this same pic, or if you want to do it, make it on a notebook, you can make it. This is my number, 957-437-5555. Send the homework. You can finish it right now, just after the session in 5 minutes, and send it to me, or you can send it by tomorrow evening, right? Just copy this quickly. And once you are done, we will take a quick feedback of the session. हाँ सर बोलो. सर एक बार आपका नंबर वापस बता दीजिए ना. तो देखो लिखा हुआ है सामने बोर्ड पे. ओके. और साग्निक घोष, तुम सॉरी साग्निक, तुम्हारा नाम क्या है? सागनिक पहाड़ी. पहाड़ी. साग्निक पहाड़ी. यू हैव टू राइट योर नेम, पेरेंट्स नेम एंड देयर सर कॉन्टैक्ट लिख नंबर दिया इन है, द आप चैट रूम. देख लीजिए कमेंट बॉक्स में. क्या? मैंने लिख दिया है, अपना नाम सब कुछ अच्छा लिख. ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक. गुड. ओके, नोटेड ऑल ऑफ यू. दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डन. सर हम्म तो ज्यादातर हमने ये देखा है कि ये 180, 270, 360 इंक्लूड नहीं करा जाता है. मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, मतलब ये जो आप जो बता रहे हैं ना, ये तो मैंने क्लास 9 में पढ़ लिया. फिर हमने देखा था कि ये 180, 270, 360 इंक्लूड नहीं करा. ये क्या इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. अच्छा. अगर अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाओगे. हाँ ये भी तो सही है. हाँ. है ना? 10th तक नहीं पढ़ते हैं, 10th के हाँ. आगे पढ़ते हमारा तो भी 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में वो प्रूव है, जैसे मतलब हैं. थियोरेम्स हाँ लिख हाँ देते हैं हाँ. वो बस उसका. बस बस. और मतलब सीबीएसई में क्या होता है, ज्यादातर 10th में ही पूरा ट्रिगोनोमेट्री होता है, मतलब पूरी ट्रायंगल देकर उनको एंगल्स देता है. लेकिन वो भी हमारा तो 90 तक ही इसमें तो करते 9 हैं. और 10 में डिवाइड किया गया है. हम्म, मतलब 9 में थोड़ा है और 10 में भी थोड़ा है. ठीक है. चलो, आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट. यस और नो? डन. Yes, sir. Okay. Sir, So, done, sir. okay, good. So I'll stop sharing this. All of you, please, a quick feedback of today's session. So let's start with Harshit. Harshit, so you heard it. You did trigonometry for the first time. Yes or no? Yes. So you can categorize the feedback in three. You can segregate into three parts. First is your standard, right? You are in which standard, whether you are aware about trigonometry or not. And after this session, you understood the session or not, and whether you have any doubts or you're carrying forward with your doubts or you don't have any doubts, or that's it. And how was the session? Huh? Please do it quickly. So you are in which standard, Harshit? Ninth. 9. So were you aware about trigonometry before this?
No, sir. No. Whatever we learned today, you understood or not? Yes, sir. I understood. Understood? Don't have any doubts? Sure? Yes. You like the session? Yes, sir. Okay, that's it. So this is how you have to. I need not have to ask it again. You can just go it on your own, right? Vaishnavi, what is your feedback, beta? Sir, can I leave? Just a second. 2 मिनट में सबका हो जाएगा. फिर छोड़ना. Sir, ठीक है? like before the class, I did not had the idea of trigonometry, and I just knew the word, and I thought it would be confusing, and just I thought it's too advanced for eighth standard. But when you made us understand about the trigonometry, and it was very easy, and you made it clear and break it down, so that was easy, and you made honestly the maths class like a kind of really fun and something that is really easy to understand. Very good. So this is the way we learn physics also, right? So don't worry. Yes. Physics is not a difficult subject. Believe me, it's a very interesting subject. If you learn physics in this way, you'll really enjoy the session. That's it. Thank you. Yes, Chandan. Sir, the class was very nice. I understood many topics Very and good. you left me with no doubts. Okay. Great. Thank you so much. Yes, Kavish, please switch on your camera. Come on the camera. Sir, I have understood everything. Please. Understood everything? Shabash. Yes. You are already ahead of the crowd. है ना? Ahead of everyone. Very good. You did nicely. So your recall value is very good. Shabash. Yeah, I hope you don't have any doubts. No, sir. Last part also, Yes. the 53, 37, 53 degrees also. Very good. Nevan, what about you? Sir, I understood the topic, sir. I had no doubts, sir. Very good. Sir, I understood everything, sir. So teaching is so nice, sir. Thank you so much, Nevan. Thank you so much. Aniket, Yes, समझ sir. आया बेटा? Yes, Understood? sir. No doubts? So No, all sir. of you, since you guys don't have any doubts, please fill in the chart and send it to me, right? That is your homework for today's session. Yes. अरे मैं पूछना ही भूल गया. Sagnik, how was your हाँ session? सर, सब कुछ ठीक था। ऐसे तो ये सब मैंने पहले ही थोड़ा सा होकर पहले ही रखा पढ़ था, रखा है लेकिन तुमने, हाँ. लेकिन आपका जो मतलब समझाना था, वो जो एसोसिएटेड एंगल्स था ना, वो तो हम लोग ऑल साइन टेन कोस जो बोलते हैं, वो हाँ आज हाँ. तक मैंने बहुत बार करा था, लेकिन इतना अच्छा तो मेरे को आपके जैसा कोई नहीं लगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से उसको समझा दिया मेरे को, स्लाइड चलो के थ्रू ग्रेट. और सब कुछ के भी। मेरे को वो जैसा मेरे वो क्लास 11 में है, तो मेरे को तो कुछ डाउट नहीं होने वाला, मैं आज तो सोच ही सकता हूँ। चलो दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच. और थैंक यू सर, सो आप मच. अगर मेरे को थोड़ा अभी क्लास 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें भी थोड़ा आप मेरे को टिप्स एंड टिप्स दोगे तो अच्छा लगेगा वो भी। अभी अभी तो बहुत लेट हो गया है एक्चुअली. फिर हम किसी दिन बैठ के बात कर सकते हैं. यू हैव माय नंबर. वी ओके कैन सर। टॉक. राइट. ओके सर। Okay. Thank you so much, kids. सर Thank you so ऐसे much, भी Harshit. I kept you waiting. You can leave now. Huh? Okay, sir. Thank you so much, Thank kids. you, I sir. wish you all the best for all your future endeavors, whatever you want to aspire for, or whatever you are aspiring for, and whatever you want to prepare for. You may leave, right? Sagnik, you can stay back if you want to talk something. ओके सर। Thank you, kids. Bye. Good Bye, night. sir. Bye, sir. Bye Thank you. bye. Bye bye. Bye, sir. Good night. You guys Bye, did well. sir. Right? You did well. Very good. Thank you so much. Yes, Sagnik. Bolo. तो मैं ये कह रहा था कि हमारे अभी हम्म क्लास 10 में है हम्म कुछ मतलब थ्योरम्स का कुछ प्रूफ प्रूफ है, तो हम्म वो तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है वो है हम्म मतलब फिजिक्स में। तो आप थोड़ा मतलब आपका कुछ एक्सपीरियंस होता था कि फिजिक्स में कैसे स्ट्रांग बनना है, क्योंकि फिजिक्स तो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स ना, में तो। अगर स्ट्रांग बनना है तो सबसे पहले बेसिक मैथ से स्ट्रांग होना चाहिए. कैलकुलस, वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. अच्छा अगर ये तीन चीज अच्छा है तो फिर बाकी सब चीजें अपने आप स्ट्रांग हो, तो फिर फिजिक्स स्ट्रांग होती है. फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है. सर, और ठीक है. आप जैसे कि हम लोगों ने, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, ऐसे भी हम्म आपके पास वेस्ट बंगाल के कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत मतलब सारे नहीं. बहुत सारे हैं, तो बहुत आप सारे तो नहीं समझ, है. बहुत बहुत सारे। सारे नहीं है. हाँ. तो ऐसे भी इधर पे एक मतलब बहुत यूज्ड बात हो गई है कि 11th में फिजिक्स मैथ बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, और मतलब है. बहुत। होने वाला नहीं है. है.
और उसमें हमको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा जो मतलब क्लास 10th है, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि आईसीएससी में अच्छा रिजल्ट कर दोगे वो तो एक बर्थ सर्टिफिकेट की तरफ हो गया, फिर 11th में तो असली मजा दिख जाएगी, ये सब बताते हैं। लेकिन हम्म थोड़ा सा अगर आप तो इतना अच्छा टीचर है, आप अगर बताएंगे कि क्लास 11th में उतना ऐसा फिजिक्स को कैसे हैंडल करे या मैथ्स को कैसे हैंडल करे, तो मेरे को। पहले देखो, मैंने अभी जो बोला तुमसे वो बिल्कुल सही है, एकदम 100%। एक तो देखो, अगर फाउंडेशन शुरू करना है तो यू स्टार्ट विथ फाउंडेशन। यस। पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो तुम मैं मेरे से पढ़ना जरूरी नहीं है, तुम अपने से भी पढ़ सकते हो। स्टार्ट कैसे करना है कि 11th का थोड़ा सा टॉपिक पहले से पढ़ के रखो। ओके। ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट 6 चैप्टर्स करवाता हूँ, हम्म। तो 11th का 6 मंथ्स का जो पोर्शन है वी कंप्लीट इन दिस ईयर। ओके। ठीक है, इन 1 ईयर। यस तो सर। छोटे बच्चे हैं, 7th 8th 9th 10th वाले, तो सबको क्या होता है, वो 11th ऑलरेडी उनका हेड स्टार्ट मिल जाता है। हाँ। उसके बाद 11th में जब आते हो तुम लोग, तो वहां पे यू कैन स्टार्ट विथ द नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स। ओके। तो ये ठीक है। मतलब स्ट्रेस को थोड़ा कम, मतलब कम करता है। और थोड़ा नहीं, बहुत कम करता है। तुम अभी 11th में जाओगे तो तुम देखोगे जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करने वाले रहते हैं वो धीरे से जेई मेंस पे आ जाते हैं, थोड़े दिन बाद जेई मेंस के बाद स्टेट बोर्ड पे चले जाते हैं, स्टेट के किसी कॉलेज के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो फर्स्ट 6 मंथ में ही बच्चे गायब हो जाते हैं, जेई एडवांस वाले। 99% बच्चे सब गायब हो जाते मैं हैं। जो तो पहले से कर मैं रहा तो होता है तैयारी, वही बचता है। हाँ। जो आपने उस दिन मास्टर क्लास में ही बता था कि एक रैंक रेडी लेन और एक वो और एक लेन जो आपने बताया था वही। और मतलब मेरा क्लास 9 से ही मैं थोड़ा थोड़ा मैथ का वो फाउंडेशन कर रहा हूँ। तो मेरे को मतलब वो सेट एंड रिलेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब तो थोड़ा थोड़ा आता ही है, और बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा थोड़ा आता ही है। लेकिन मेरे को बहुत प्रॉब्लम किया लिमिट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब चैप्टर्स। और फिजिक्स का मेरे को मतलब फिजिक्स मैंने किया, एक चैप्टर ही किया, सर्कुलर मोशन। मेरा अभी क्लास 10th में एक चैप्टर है फोर्स, और फोर्स के अंदर सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वहां पे मेरा सर्कुलर मोशन चैप्टर भी है। तो वो मैंने थोड़ा सा रिलेट करके हमारा हमारा जो मतलब बोर्ड का जो बुक चलता है छाया प्रकाशनी, उधर से मैंने थोड़ा थोड़ा किया। तो मेरे को वो सर्कुलर मोशन ज्यादा टफ नहीं लगा। ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं है, लेकिन वैसा। और एक सच्ची बात बताऊं तो मेरा जो स्कूल में जो सर है ना, वो तो 2011 की बुक से क्वेश्चन करते थे क्लास 9 में। इसलिए क्लास 9 में मेरा फिजिक्स मतलब बहुत डर लगता था। मतलब जब वो मोशन आया, मोशन इन वन डायमेंशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो बहुत ही मेरे को टफ लगा। लेकिन अभी क्लास 10th में तो वो मतलब उतना टफ नहीं लगता है, क्योंकि एक तो क्लास 9 में हमने लेट स्टार्ट किया था क्लास 9 पढ़ना ही। और क्लास 10th में तो वो ऐसे ही पता है बोर्ड्स है, तो सब सर सीरियसली हो जाते हैं, तो और स्टार्ट भी करवा देते हैं, इसलिए ज्यादा मतलब वो डाउट नहीं हुआ। फिर भी आप अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे कि ऐसा अच्छा बोर्ड्स में कैसे करें और फ्यूचर देखो, जो 11 तुम में। कर रहे हो वो ठीक है। जो तुम देखो, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बोर्ड के लिए तो सिंपल है बेटा। टेक्स्ट बुक ठीक से कर लो, प्रीवियस ईयर का पेपर कर लो, तुम्हारे मोर देन 95% मार्क्स आते हैं। अच्छा। जितनी बार देखो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के बुक को जितनी बार सॉल्व कर लोगे, उतने नंबर तुम्हारे परफेक्ट होते चले जाएंगे। द अच्छा। सेम गोज विद साइंस ऑल्सो। अच्छा। ठीक है। बाकी तो लैंग्वेज है, बाकी 2 लैंग्वेज और एक जो तुम्हारा सोशल स्टडीज वगैरह होगा। ना सही नहीं है, वो तो सीबीएसई में है, तो हमारा है हिस्ट्री ज्योग्राफी, दो दो अलग सब्जेक्ट्स है। बस ठीक है। हमारा रीजनल लैंग्वेज वो तो जो बंगाली। पढ़ोगे वही आएगा, उसमें तो हिस्ट्री तो बदल नहीं सकते तुम, उसको याद करना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ। है ना। भारत कब आजाद हुआ था, तो 1947 में ही हुआ था। हाँ। अब उसका वो 1955 तो हो नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, वो वो तो तो। याद ही करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ। है ना। तो मैथ्स के लिए यही है कि मैथ्स जितनी प्रैक्टिस करोगे, अच्छा। उतना उतना तुम्हारा परफेक्शन आएगा 10th के लिए। ठीक है। ठीक है सर, करो। आपसे हाँ। बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सेम ईयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th बोर्ड। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। सर।